to start the class of the Constitution. We have completed the power and functions of the President, and we have also started the power and function of the Vice President of the India. And we have already taken the brief discussion about what are the roles, responsibilities, the election procedure of the Vice President. So, coming forward, let's take a recap upon the concept we have discussed about the Vice President, and then we'll be moving forward. Okay. So, when talking about the Article 63 of the Indian Constitution, it speaks about that there shall be a Vice President India when there is the vacancy in the post of the president due to any certain reason. Okay. So we have discussed about the three clauses. In the first clause of Article 65, we have discussed when there is the occurrence of any vacancy of the office or any kind of the removal. Like see, when we have talked about the president, we have discussed that the president can be removed from his office or can leave his office in three ways. पहला चीज ये होता है उनका जो 5 साल होता है the person who is being elected as the president of the India, that person serves there. दूसरा होता है क्या, तबीयत खराब होता है, उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम होता है, पर्सनल इश्यू होता है, जिसके वजह से that person is unable to continue his service as the president of the India, and that person takes a break from his office of the president. तीसरा चीज क्या होता है, that person gives the resignation from the president. Either वो कुछ दिन का छुट्टी लेते हैं, उनका तबीयत खराब होता है, ऐसा कुछ होता है उसके वजह से, या फिर ड्यू टू द इनकैपेसिटी टू कंटिन्यू एज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, मान लीजिए हो गया जिसके वजह से वो अपना ऑफिस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर, सो ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन द प्रेसिडेंट इज गिविंग द रेजिग्नेशन. एंड द लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां पे द प्रेसिडेंट इज बीइंग इम्पीच्ड फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन, उनको अपने रेजिग्नेशन से होता है बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, the Lok Sabha and Rajya Sabha, both the houses of the parliament together takes action against the president for any kind of his unauthentic or illegal activity, and the members, the 2/3 members of both the houses, they need to give their consent. Though 2/3 of the members of both the house, उनका सहमति का बहुत जरूरी है for the removal of the president. When the bill, the impeachment has been passed by the 2/3 member of both the houses, in that case the president is being impeached from his designation. So ये चीज हमने पढ़ा था regarding the president. So for the above certain reason, under Article 65, हमने when there is the vacancy in the president's office, president का ऑफिस में जब भी वैकेंसी रहता है, that vacancy might be a temporary vacancy. Temporary vacancy क्या होता है, president is out for the trip, president has certain kind of work, or he is ill, he having any kind of the family issues, कुछ भी reason के वजह से for some days the president is unable to attend the office. दूसरा क्या होता है, permanent vacancy, जैसे कि वो resign कर देते हैं या फिर उनको हटाया और he has been removed. Okay, so in these cases the vice president to act as the president of the India until and unless the new president takes over the office. जब तक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाता एंड नया प्रेसिडेंट ऑफिस आके उनका काम करना शुरू ना कर देते, तभी तक द वाइस प्रेसिडेंट is considered as the president of the India and he takes the charge of the office of the president. Okay, and दूसरा चीज क्या बोला जाता है, in the period of the acting as the president of the India, the time period when he acts as the president of the India, who the vice president, he is liable to enjoy all kinds of the benefits they associated to the power and designation of the president.
प्रेसिडेंट को जो जो बेनिफिट मिलता, बेनिफिट द वाइस प्रेसिडेंट is liable to get when he acts as the president of the India, which is हमने discuss. Next comes Article 66, election of the vice president. कि the presidential election is being done where the members of the both the houses as well as the member of the legislative assembly, they also takes part in the election of the president. But while talking about the election of the vice president, the members of the both the houses, they take part. But the members of the legislative assembly, they don't include in the election. मतलब यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं ना, तो कौन लोग? द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस, द हाउस ऑफ द स्टेट्स दैट इज राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपुल दैट इज लोकसभा, ये दोनों हाउस का जितने मेंबर है, दे डू द वोटिंग एंड दे चूज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे डू नॉट टेक एनी एक्टिव पोजीशन व्हाइल डिसाइडिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. वहां पे उनका वोटिंग का कोई राइट, लाइक द वोटिंग राइट टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का चुनाव में उन लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाता है. किसको? द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. बट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, only the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, they do take part and they elect the vice president of the India. Got it? Then coming to Article 67, it speaks about the terms of the office of the president. जहाँ पे हमने ये पढ़ा था, क्या है? अगर vice president सही सलामत काम कर रहे हैं, then he or she is going to serve as the vice president of the India till the 5 years from the date of his election. जिस दिन से वो चुनाव में जीतते हैं, the day he wins the election as the president of the India and takes the charge of his office or her office, from that day to the exact completion of the 5 years, the vice president takes the charge of the chair of the vice president. Okay? And ये चीज माना जाता है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिजायर्ड पीरियड, 5 साल खत्म होने से पहले, द अनदर पर्सन और एनी अदर पर्सन should be elected as the vice president, but the same person also can be re-elected as the vice president. But the election must need to take place. 5 साल का चुनाव का जो पीरियड होता है ना, वो 5 साल का पीरियड खत्म होने से पहले ही दूसरा इलेक्शन होना बहुत जरूरी है. एंड द वाइस प्रेसिडेंट टू बी, जो कि दोबारा अपना ऑफिस संभालेंगे, मतलब 5 साल के बाद अभी जो वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका कार्य जाएगा ना, तो उसके बाद जो कोई भी दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर द पर्सन हु विल बी इलेक्टेड अगेन एज द वाइस प्रेसिडेंट, उसके लिए भी तो. एंड फॉर दैट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट नीड टू बी टेकन प्लेस बिफोर द completion of the period of the 5 years. And there is one more thing has been told. There is the provision of the re-election of the vice president. If I am a person who has served 5 years as the vice president of the India, it is not necessary that I should take rest at my. I can be re-elected as the vice president of the India again and again and again, because we have already discussed India is a democratic country. India पे क्या चलता है आपका? Democracy. That is why if a person is being elected as the vice president, ये जरूरी नहीं है कि वो दोबारा खड़ा हो. Person if elected as the vice president of the India, that person can again stand for the same role, same designation. And if elected, that person will also be eligible or capable to serve his office again as the newly elected vice president of the India. That means same person 2 बार या 3 times or 4 times can be elected and continue his office or her office as the vice president of the India. But in the only case the person need to be elected
बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसको इलेक्शन में जितना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से ले पाएंगे। अगर इलेक्शन में और 10 years दैट पर्सन इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ये नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना। दूसरा, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ द ऑफिस। या दूसरा क्या बोले हमने, अगर वाइस प्रेसिडेंट जिस टाइम ड्यूरेशन पे वर्किंग एज द पावर ऑफ हिज ऑफिस, he faces any kind of circumstances जहां पे उनको लगता है that he is unable to continue his office as the vice president, वहां पे वो क्या करते हैं, he resigns from his office as the vice president and he or she handovers his resignation to whom? To the president of the India. And यहाँ पे ये बोला जाता है by writing his hand address to the president. अपने हाथ में he writes his resignation and handovers the resignation to the president कि देखिए this is the reason and for this reason I don't want to continue as the vice president of the India. And the resignation should not be done with any kind of coercion, undue influence, misrepresentation or any kind of unauthentic forces. यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी भी तरह का रेजिग्नेशन दे रहे हैं ना, दैट शुड बी विथ हिज ओन कंसेंट टू रिजाइन। रेजिग्नेशन देने उनका खुद कंसेंट रहना बहुत जरूरी है। दैट पर्सन शुड रिजाइन विथ हिज ओन कंसेंट, है ना। दैट शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी आउटर फोर्स और एनी आउटर इन्फ्लुएंस to make him resign from his office. तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा? We have understood about तीसरा पॉइंट हमने the vice president will continue his office until the successor of him enters into the office. Like मान लीजिए I am the vice president of India. I have continued my office till the 5 years. So जब तक नया इलेक्शन नहीं खत्म हो जाता and after the election, as far as the new vice president is not taking the chair of the official designation, I will continue to serve as the vice president of the India. दूसरा, मान लीजिए I am giving my resignation as the vice president during my work period. मतलब 5 साल का ड्यूटी 5 साल का है, but in between the 5 years, in the 3rd year of my job or 3rd year of my service, I decided to resign. So when I gave my letter of the resignation to the president will ask me कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक हमने नया वाइस प्रेसिडेंट ना ढूंढ लेते। Then during that period, the fresh election of the vice president will be taken place and another vice president will be chosen by the house of the parliament. जब दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव खत्म हो जाएगा and that person comes to take over the office of the vice president, I can resign as the vice president per se. समझ में आया? And most importantly हमने पढ़ लिया एक्सपायरी ऑफ द टर्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। So when the question arises about the removal of the vice president from his office, then you might ask me कि हमने जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कस किया था, then हमने डिस्कस किया था कि for the impeachment of the president there is the need of the approval of the both the houses, 2/3 majority। तो यहाँ पे क्या होता है? The same procedure। यहाँ पे जब वाइस प्रेसिडेंट कोई भी अनऑथेंटिक या इलीगल ऐसा कुछ काम करते हैं जिसको लीगल नहीं माना जा रहा हो, एंड द एक्टिविटी व्हाट एवर वाइस प्रेसिडेंट इज डूइंग इज अनऑथेंटिक और एंड इज जस्ट नॉट फॉर द पब्लिक बेनिफिट इन नेचर, इन दैट केस अगर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस को लगता है दैट द वाइस प्रेसिडेंट शुड रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, then that particular house, okay, yes, basically president का election, president का जब removal होता है ना, then any of the house
can raise the resolution of the impeachment. But in the dismiss or the in the removal of the process of the vice president, only the house of the state, that means Rajya Sabha, can raise the resolution for the impeachment. बट प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पे कौन था? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था कि राज्यसभा ही इम्पीचमेंट करे, लोकसभा ही क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं था. एनी ऑफ द हाउसेस of the parliament can raise the resolution of the impeachment for the removal of the president. But when we are talking about the removal of the vice president, there is no particular need that कि मतलब there is a particular need that कि राज्यसभा में ही vice president का impeachment का resolution कहीं ही, and that need to be approved by the majority people of the Rajya Sabha. Then the same resolution passes to the Lok Sabha, and in the Lok Sabha, the same resolution of the impeachment need to be approved after the proper examination and need to be approved by the majority of the people. Like the presidential removal, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी का अप्रूवल जरूरी नहीं है. यहाँ पे अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर अप्रूविंग टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, देन द रिजोल्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. मान लीजिए कहीं पे इन द, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, in the Rajya Sabha, मान लीजिए there are the members like 250 members in the Rajya Sabha. From those 250 members, अगर 200 members give their assent कि हाँ ठीक है, we want the vice president to be removed, then the vice president can be removed. अगर जैसे कि मतलब we are talking about the presidential impeachment, वहां पे स्पेसिफिकल नंबर 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, बट यहाँ पे कोई 2/3 मेजोरिटी का जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी का. अगर एक घर में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग 6 लोग भी बोलते हैं ना कि हाँ इनको हटा देना चाहिए, बाकी 4 लोग बोलते हैं कि नहीं, तो 6 लोग जो बात सुनाया जाएगा एंड द vice president will be removed from his office. Got it? So, but this is not so easy, right? That there must be the presence of the proper investigation procedure. उसका सही तरह का छानबीन होगा, उनके अगेंस्ट जो भी कंप्लेन आया ना उसी को सही तरीके से परखा जाएगा कि हाँ ये कितना सही है. एंड द वाइस प्रेसिडेंट विल आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप हिज पार्ट, लाइक वो अपना पक्ष रखेंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू स्पीक अप कि हाँ मैंने ये गलती किया है, मैंने ये गलती नहीं किया है. दिस थिंग्स ऑल्सो भी टेकन केयर ऑफ. ऐसे किसी को हटाया नहीं जा सकता. से पहले सारा चीज को सही तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ही किसी को अपना, बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एनी काइंड ऑफ द जनरल डेजिग्नेशन, एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट इफ एनीवन इज एट द रूलर ऑफ द कंट्री, देन दैट पर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के तो होते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, सो उनको ऐसे कैसे तो नहीं हटाया जा सकता ना. देयर शुड बी द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी टेकन प्लेस, प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर कंसर्न्स, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, उसी के बाद ही उनके लिए जो भी स्टेप्स लिया जा सकता है. 1 second या सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, या वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 67 and the next part, article 68. It speaks about the time of holding the election to fill the vacancy of the in the office of the vice president and the terms of the office of the person as elected to fill the vacancy. Okay, तो ये बोला जाता है that when the terms of the vice president or president is about to be completed, जब वाइस प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट का टर्म जो है दैट इज यूजुअली द 5 years, 5 साल, वो खत्म होने को होता है, उससे पहले ही द न्यू इलेक्शन नीड टू बी टेकन प्लेस. एंड आफ्टर द इलेक्शन, व्हेन द पर्सन who will be the next vice president is being chosen, the previous vice president leaves his office or completes his tenure. Got it? Article 69, it speaks about oath or affirmation by the vice president. Okay, so when we are talking about the oath or affirmation by the vice president, then हमने यहाँ पे और एक चीज भी पढ़ेंगे, like what is the exact oath the vice president takes before the entering into the office, जो कि प्रेसिडेंट का ऑलरेडी,
कि वो क्या क्या बोलते हैं, लाइक व्हाट आर हिज वर्डिंग्स, कि हाँ मैं देश के लिए ये करूंगा। वो भगवान के नाम पे शपथ लेते हैं ना बिफोर एंटरिंग टू द ऑफिस, वो ओथ एक्चुअली क्या है। सो अंडर आर्टिकल 69 ये जो ओथ लेते हैं ना, क्या बोलते हैं। एंड हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ओथ के बारे में बात करें, देन हु बाय whom the president takes his oath, by the supreme court, by the chief justice of the supreme court। तो प्रेसिडेंट का जब ओथ टेकिंग सेरेमोनी होता है तो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। एंड इन द सेम वे वाइस प्रेसिडेंट का जब ओथ देने का बारी आता है, देन वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं। किसके सामने वाइस प्रेसिडेंट अपना ओथ लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया के सामने, एंड वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। क्लियर। तो क्या बोलते हैं एज एन ओथ, आई XYZ आपका नाम जो भी है, स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड, भगवान के नाम पे शपथ करता हूँ या शपथ करती हूँ, दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड सोलेमली अफर्म, आई विल बियर द ट्रू फेथ, मैं अपना ऑनेस्टी जो है, भरोसा जो है, विश्वास है, वो कायम रखूंगा या कायम रखूंगी। That means I am not going to do any kind of activity which is against the people's trust. I am not going to lose my conscience. I am not going to lose my truthfulness, my faith upon the God। के नाम पे शपथ कर रही हूँ कि मैं जो कुछ भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। Got it? And solemnly affirm कर रही हूँ, क्या affirm कर रही हूँ, allegiance of the Constitution of the India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। क्या बोलते हैं, मैं जो भी ड्यूटी करने जा रही हूँ टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आई प्रॉमिस दैट मैं अपना ड्यूटी, अपना कार्य अच्छे करने के लिए तैयार हूँ, and I will consider the Constitution of India as the law established। मेरा कार्य का जो तरीका होगा, by whom it will be governed, it will be governed by the Constitution of the India। So moreover बोला जाए तो Constitution of the India is the supreme authority of the India। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हो या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाए, everybody is bound and everybody affirms, follows, considers, obeys what, the Constitution of the India। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जितना सारा प्रोविजन होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, दैट ऑलवेज हैव द स्पेसिफिक अथॉरिटी, स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक ऑथेंटिसिटी। एंड ये माना जाता है द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द मेजर लॉ बुक, मेजर लॉ सिस्टम ऑफ द इंडिया, जिसको उन लोगों ने अपना कार्य के लिए फॉलो करते हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेसिडेंट का काम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का ड्यूटी क्या है, उनका रोल्स क्या होता है, उनका टर्म कितना होता है, what are the profit they get, everything has been explained in a very good manner, and that is why the Indian Constitution is called as the largest written constitution in all over the India, you know? So coming to the Article 70 of the Indian Constitution, it speaks discharge of president function in other contingencies. This speaks that Parliament may make such provision if it thinks for it for the discharge of the functions of the president in any contingency not provided in this chapter। तो यहाँ पे अंडर द आर्टिकल 70 पार्लियामेंट को ना एक पावर दिया जाता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे बताया गया है कि हाँ प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग्स। बट इसके बाहर अगर किसी भी तरह का जरूरत होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट का इंटरप्शन या प्रेसिडेंट का पावर इम्प्लाई करना बहुत जरूरी है, एंड द
पार्लियामेंट फील्स दैट इट इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट को भी यही लगता है. सो इन दैट केस द पार्लियामेंट कैन डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस, डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी. एंड पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कैन मेक लॉ फॉर सर्टन इम्प्लीमेंटेशन. कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट नया लॉ तैयार कर सकता है. But then comes to the point, Article 71, it speaks that matters relating to or connected to the election of the president of the vice president. Okay, ये माना जाता है if मान लीजिए there is the election procedure of the president vice president, बट हमेशा हर कोई चीज सही तरीके से हो इसका कोई हम गारंटी नहीं दे सकते, इस पे गड़बड़ तो होगी कि नहीं. सो कभी ना कभी देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ द डिस्टर्बेंसेस, सम काइंड ऑफ द डिस्प्यूट्स that has been taken place, right? So the coming to that point, when there is any kind of the dispute for the election of the president of the vice president, जब प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पे किसी भी तरह का डिस्प्यूट आता है, देन वहां पे क्या होता है, the matter directly goes to the Supreme Court of the India. क्यों जाता है, हमने पहले ही पढ़ा था. There are three bodies in the Indian Constitution. पहला है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव इज द लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज द लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. और अगर लॉ मेकिंग पे एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन पे किसी भी तरह का गड़बड़ होता है, then what is the authority who balances all these things? That is the judiciary. ये मान के चलिए कि जुडिशियरी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया. इंडिया पे भले ही प्रेसिडेंट इज द बिगेस्ट अथॉरिटी माना जाता है, लेकिन किसी भी तरह का डिस्प्यूट कहाँ पे भी होता है, कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, किसी का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे कोई भी कंफ्लिक्ट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज ऑफिस किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया, तो ये सब में अगर एनी काइंड ऑफ द बॉडी, एनी काइंड ऑफ द अथॉरिटी हुज डिसीजन इज बाइंडिंग अपॉन एवरीवन, अगर कोई सबको कंट्रोल करता है, देन दैट इज द जुडिशियरी सिस्टम ऑफ द इंडिया. And you know that is why India is called as the democratic country. क्योंकि अगर इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो अभी तक हमारा डेमोक्रेसी कंटिन्यू नहीं हो पाता. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द सिस्टम, दैट इज द सुप्रीम बॉडी जो कि सारा चीज को गवर्न करके रखा है. एंड दैट इज द बॉडी जो कि हर कोई गलत होने से रोक, दैट माइट बी द एग्जीक्यूटिव, दैट माइट बी द लेजिस्लेटिव. अगर करते हैं किसी भी तरह का लॉ लाते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जो कि लोगों का हार्म कर रहा हो, सो इन दैट केस इफ एनी बॉडी और एनी सिस्टम व्हिच कंट्रोल्स द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, दैट इज द जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे भी सेम चीज बोला गया. क्या बोला, द डाउट्स एंड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट, that is being inquired and decided by the Supreme Court of the India, and that decision will be final. President and Vice President का इलेक्शन को लेके अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है, एंड फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ दैट डिस्प्यूट वो कहाँ तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड इट इज स्पोकन दैट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर इज कंसिडर्ड as the final decision. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को ही फाइनल डिसीजन माना जाता है. Clear? Next, if the election of a person of a president or vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him in exercise of performance of the power during the office of the president, vice president, on or before of the date of the decision shall not be. Okay, यहाँ पे और एक चीज बोला गया है, that is most important point. ये चीज समझिए थोड़ा कि मान लीजिए आई एम ए पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. दोनों के लिए बता रही हूँ, प्रेसिडेंट के लिए बता रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के. ओके, तो मान लीजिए आई हैव बीन सर्व्ड माय ऑफिस फॉर 1 year, बट 1 साल के बाद मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ जिसके वजह से मेरे को अपने मतलब जो भी
डेजिग्नेशन है, आई हैव बीन डिक्लेयर्ड रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम माय ऑफिस। मेरा जो इलेक्शन है ना, उसको गलत बताया गया है कि इट हैज बीन प्रूव्ड दैट कि आई हैव बीन मतलब टेकिंग द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट इज दैट मेरे को अपना डेजिग्नेशन पे नहीं रहना चाहिए आपसे। सो क्या होगा, मेरे को अपने डेजिग्नेशन से जाएगा। मेरा टेन्योर कितना था, 5 साल का था। मैंने कितना साल ऑलरेडी सर्व कर चुकी हूँ, 1 साल ऑलरेडी सर्व कर चुकी। सो आफ्टर 1 ईयर अगर ये डिसीजन आता है तो 1 साल के अंदर मैंने कितने सारे बिल में साइन की होगी। आई हैव मस्ट टेकन सर्टन काइंड ऑफ द डिसीजन। मैंने मतलब आई हैव बीन बिकम द पार्ट ऑफ द सर्टन एग्रीमेंट्स or certain treaties on behalf of the India, or there must be many kind of the circumstances जहां पे I have used my power as the president of the India। तो क्वेश्चन आता है, तो मैंने जो 1 साल के ड्यूरेशन पे इतना भी काम कर लिया, क्या वो सारा कुछ इनवैलिडेट हो जाएगा? As because I have been declared inappropriate or unauthorized to continue my office as the president or vice president? The answer is no. This is a big no, because even if I have been declared invalidate to continue my office as the president or vice president of the India, during my time period, the agreements I have signed, the responsibilities and the powers I have been utilized is not going to null and void। उस चीज को void नहीं माना जाएगा। that will continue as per se। For example, मान लीजिए during my presidential rule of the 1 year, जितना 1 साल में अपना ड्यूटी कर रही थी, I was continuing my office। In that period, I have signed or approved a law जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जिसकी का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू है। तो जस्ट बिकॉज आई हैव बीन रिमूव फ्रॉम माय ऑफिस, क्या वो लॉ को भी रिमूव कर दिया जाएगा? नहीं ना। दैट लॉ विल कंटिन्यू कंटिन्यू एज बिफोर। पहले से उसका लॉ कंटिन्यू हो रहा था, अभी भी उसी का ऐसे ही कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। Got it? So here is the provision about the presidential or vice presidential dispute. And in that dispute, the decision of the Supreme Court will be considered as the final one. And second point कि अगर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस कंटिन्यू करने के लिए नॉल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है, then any kind of presidential authority or activity carried by them during their office before the decision will not be null and void। That decision or that power implemented by them as the period of the president when they were serving, that will continue as before। But from further onwards, जिस दिन से उनको अपना ऑफिस के लिए नॉल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, उस दिन से शुरू करके आगे से जितना सारा भी चीजें आएगा, that is not going to be approved by him, that is going to be approved by the new person who will be elected as the new president or new vice president of the India। Got it? So the third point, the third provision, it speaks subject to the provisions of the Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of the president, vice president। Parliament has the power to regulate any kind of the law for the election of the president and the vice president। That means Parliament, obvious बात है, because Parliament is called as the legislative body जो कि law maker, right? So अगर उसको जरूरत लगता है, if the Parliament feels that no, the previous law is dead and अभी president and vice president का election के लिए कोई नया law आना जरूरी है, then that law is going to be definitely brought by the Parliament, and there must be the need of the approval of the majority of the people from the opposition as well as the ruling party to approve that particular bill or that particular law, then only that law comes into the force। All right. And most importantly, that law, after the approval of the both the houses, must need to be approved by the current president who is serving as the president of the India in that particular time period। Clear? The last point, it speaks the election of the person as a president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members
ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग हिम। ओके, यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन है, जो पोजीशन है, दैट शुड नॉट बी वैकेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इफ प्रेसिडेंट का बात तो है था, अगर प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी सडन वजह से उनका डेथ हो जाता है, वो रिजाइन कर देते हैं या उनको हटा दिया जाता है, देन इमीडिएटली द न्यू इलेक्शन टेक्स प्लेस। एंड जब तक नया प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट ना हो जाता, तब तक द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स केयर ऑफ द ऑफिस। And in the same case, when there is the sudden death or resignation or kind of removal of the vice president of the India, वो तभी तक अपना कंटिन्यू करते, ऑफिस कंटिन्यू करते हैं जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। बट अगर उनका सडन डेथ हो जाता है तो वहां पे क्या करेंगे, मरने के बाद तो कोई ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकता है ना। देन देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ द टेम्पोररी वाइस प्रेसिडेंट till the new vice president comes into the power। and the permanent vice president का जब तक नया इलेक्शन ना हो जाए, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है जो कि उनका ऑफिस रन करते हैं till the new vice president comes to the power। ओके, बट ये बोला जाता है कि अगर प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन कुछ भी दिन के लिए खाली रहता है फॉर एनी काइंड ऑफ द रीजन, देन वाइस प्रेसिडेंट वो चेयर को संभालते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी रीजन की वजह से खाली रहता है, देन वहां पे नया वाइस प्रेसिडेंट को इमीडिएटली, एंड इन केस वो नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लगता है, देन एनी पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट एंड वो ऑफिस संभाल नया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। Got it? So this is still Article 71 of the Indian Constitution. This is about the election procedure of the president, vice president. Supreme Court in the election matter, अगर कोई भी dispute होता है तो Supreme Court का decision ही final decision। And as the Supreme Court is the highest authority of the India, तो the decision of the Supreme Court will be implemented and will be approved in India। उसका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। पहला पॉइंट हमने डिस्कस